नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं चाहता हूं आप 10 सेकंड लें और अटेंडेंस दे दें लाइक का बटन दबाकर। और आज का क्लास जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा और ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आज का क्लास जो बीकॉम, एमकॉम या फिर नेट सेट का एग्जाम देने बैठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कर रहे हैं जो कि इन स्ट्रीम्स में जो कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे एमकॉम हो गया, बीकॉम हो गया, नेट सेट का एग्जाम हो गया, इसमें बहुत वाइटल इसका सिग्निफिकेंस रहता है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होने वाला है। हम लोग सारे ट्रेड थ्योरीज को एक बार डिस्कस करेंगे अच्छे से इन डेप्थ में। थोड़ा सा फास्ट पेस चलेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलूंगा मैं, ठीक है, वरना आपका फोकस ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो आइए पहले टॉपिक पे चलते हैं और शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। ठीक है, तो दिस थ्योरी केम इनटू फोर्स और rather you can say this theory came into existence during 17th to 18th century, and this theory was originally found by Adam Smith and was backed by the bankers, mercantiles class of people, right, who agreed and supported the thought or the idea that the country must export or sell their goods and services to elsewhere other countries to earn gold, right? During that era of let's say economy, gold or silver rather was considered as one of the main currencies, right? So theory came into force during 17th to 18th century. The theory was backed by Adam Smith, and this theory suggested that a country must export more and import less, right? So since gold and silver was involved as the main currency, the only way to earn that currency was to export to the other countries, right? So when a country exports a certain goods to another country and in return it takes let's say gold or silver as the currency, their reserve of gold starts increasing, which also makes the country more prosperous. Right? So under this theory, wealth of a nation is judged on the basis of the gold reserves available with the country. So the more gold and silver reserves with the country, the more prosperous it used to be. So let's see the assumptions here, right? For the first assumption is zero sum game, which means that one country will become richer on the expense of another, right? Means when one country exports, it is earning more, right? And whereas when the importing country is importing the products, it is suffering, right? Because it has to pay its gold and silver from its reserves. All right, now the second assumption is one country profits while the other loses. As I said, the importing nation will be at the loss because they have to pay in the form of gold or silver, right? The third assumption here is the more gold reserves, the better. As I said before, the country's prosperity was judged on the basis of gold and silver reserves that it had. Fourth and last point is trade balances must be positive, right? So only way to become prosperous and have more gold reserves was to export to other countries, right? So when export is more than the import, so you will generally have a positive trade balance, which is also considered favorable. All right, that will be it for this topic. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एमकॉम, बीकॉम या नेट सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, ठीक है। जहां तक हो सकेगा मैं उन डाउट्स को एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।